Hello guys, I welcome you back to this another video, and in this video I'm going to discuss this problem from today's Leetcode weekly contest 426. It is second problem. Identify the largest outlier in an array. It is medium level problem. Let's start the discussion. It is saying that we'll begin an integer array nums, and this array will contain n elements where n minus 2 elements are special numbers, and one of the remaining two elements is the sum of these special numbers and the other is an outlier. And one more thing, special numbers, the sum and the outlier must have distinct indices but may share the same value. Okay, return the largest potential outlier in nums. Okay, let's consider example 1. Suppose input given to us is this array 2, 3, 5, 10. Now we have to find out which are these two numbers. Excluding these two numbers will sum up all the remaining numbers. Alright, in this case I am telling that 10 is the outlier, so I will mark it, and 2, 3 are a special number. It is outlier, and this the remaining number is having the sum. It is equals to sum of special numbers. तो ये 5 है, इट इज़ द सम ऑफ द ऑल स्पेशल नंबर्स. ओके, तो तीन कैटेगरी में एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज स्पेशल नंबर्स एंड द सेकंड कैटेगरी इज द सम ऑफ स्पेशल नंबर्स एंड द रिमेनिंग वन इज आउटलायर. ओके, तो अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे, मुझे इंट्यूशन कैसे आया इसका. मुझे इंट्यूशन ऐसे आया कि अगर हम पहले सारा सम कैलकुलेट कर लें, जो कि होगा 15 + 3 18 + 2 20. इन दिस केस it will be 20. Okay, and then I will again traverse through the given array and I will find out, I will consider, suppose the first element is k. अगर ये k है, then I will find out whether my assumption is true and not. तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 पर आऊँगा. I will suppose k is 2. Then I will make calculation and check whether my assumption is right or not. क्या मैंने सही माना है कि नहीं माना. अगर नहीं माना होगा then we'll move to the next. अगर ये k निकल भी आता है then we'll not stop, as you can see here we have to return the largest potential outlier. Out of all the outliers we have to return the maximum one. So we'll move on to the next number and we'll repeat the process. We'll consider it, we'll assume it to be as k, and if it is greater than the previous k then we'll update our k. Okay, तो अगर हमने 2 को k माना है तो कैसे पता चलेगा कि ये सही k है कि नहीं है. इन सभी में से एक ही तो होगा k, तो सबको चेक कर लेते हैं क्या ये k है 2, 3 या 5 या 10. ठीक है, तो हमारे पास था 2, तो 2 में से we'll subtract out of the sum of whole array, we'll subtract 2 and we'll have 18. ठीक है, हमारे पास 18 आ चुका है. नाउ अब 18 में क्या क्या है, 18 में दो चीज़ें हैं. स्पेशल नंबर है, अभी हम इसे k मान रहे हैं ना, k मीन्स आउटलायर, जो कि ये है, हमने माना इसे है अभी. ठीक है, इसे आउटलायर माना है. देन वी आर रिमेनिंग विद 2 पार्ट्स. हमने शुरू में 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था. एक तो अब जब हम ट्रैवर्स कर रहे हैं तो ये तो हो गया k आउटलायर, वैसे असली k आउटलायर ये है 10. ठीक है, तो रिमेनिंग 2 पार्ट्स क्या रहेंगे. पहला पार्ट रहेगा स्पेशल नंबर का, ये वाला,
एंड सेकंड पार्ट विल बी सम ऑफ स्पेशल नंबर। ये वाला दो पार्ट ही तो हैं, रिमेनिंग होंगे ही होंगे जो गिवन एरे में। के हमेशा तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम के अपने पास रख लेते हैं तो जो अदर एलिमेंट्स होंगे वो कंसिस्ट कर रहे होंगे स्पेशल नंबर या एंड सम ऑफ स्पेशल नंबर। ओके, दो ही पार्ट होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 18 है 2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया है, व्हाट इट इज एग्जैक्टली, इट इज सम ऑफ स्पेशल नंबर एंड अगेन सम ऑफ स्पेशल नंबर्स। ये दोनों कैटेगरी में स्पेशल नंबर का सम है इसमें इंक्लूडेड, क्योंकि के हटा दिया है हमने। आई थिंक इट इज गेटिंग मेस्ड अप, लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब हमारे पास सपोज 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। सम कितना है, 20 है। इसको पहले वाले को 2 को हमने मान लिया है के, तो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, क्या है 18 विल बी सम ऑफ दिस मच, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें स्पेशल नंबर्स हैं, है ना, सम ऑफ स्पेशल नंबर होगा ही होगा इसमें, देन प्लस अगेन सम ऑफ स्पेशल नंबर। हाउ इज दैट, ये कैसे, ये ऐसे, क्योंकि हमें दिया गया है ना स्पेशल नंबर होंगे n-2, वन ऑफ द रिमेनिंग 2 इज द सम ऑफ स्पेशल नंबर। तो इनमें से जो एक होगा वो तो सम ऑफ स्पेशल नंबर होगा ही होगा, ये तो हमने इसको माना है, ठीक है। तो ये जो 18 है ये इन दो थिंग्स का सम है, ओके। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें देन विल गेट सम ऑफ स्पेशल नंबर। ये 2 टाइम्स हो गया ना, सम ऑफ स्पेशल नंबर 1 टाइम 2 टाइम, 2 टाइम्स हो रहा है। तो अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 9 आ रहा है, ठीक है। तो 9 जो नंबर है वो प्रेजेंट होना चाहिए, हमने केस को माना है, तो 9 भी एक नंबर होगा, आउटलायर होगा, नहीं आउटलायर नहीं होगा, सम ऑफ स्पेशल नंबर होगा जो कि प्रेजेंट होगा रिमेनिंग पार्ट में। अगर वो प्रेजेंट है ना, तो हमारा एजम्पशन सही था कि इधर हो गया और ये मिल गया हमें रिमेनिंग पार्ट में, सम ऑफ स्पेशल नंबर्स रिमेनिंग पार्ट में मिल गया, तो हमने सही एजम्पशन किया था कि यहाँ पर होगा, तभी तो सम ऑफ स्पेशल नंबर होगा इस पार्ट में। अगर कोई स्पेशल नंबर होता या सम ऑफ स्पेशल नंबर होता तो हमें फिर से ना मिलता इस पार्ट में। अगर नहीं मिलेगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर मिल गया, जैसे इस केस में क्या हुआ, 9 है, तो क्या 9 है हमारे पास एलिमेंट में, 9 तो नहीं है, तो ये के नहीं हो सकता, ये आउटलायर नहीं हो सकता। इसको आउटलायर मान के जो हमने कैलकुलेशन करी थी, इस हिसाब से सम ऑफ स्पेशल नंबर 9 प्रेजेंट होना चाहिए इस पार्ट में, बाकी रिमेनिंग पार्ट में प्रेजेंट होना चाहिए था, नहीं है, तो ये आउटलायर नहीं है, पोटेंशियल आउटलायर नहीं है ये। देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ऑल राइट, इन दिस वे विल गेट our आंसर आउटलायर मैक्सिमम आउटलायर में मिल जाएगा। चलिए बाकी पार्ट कोड करके समझते हैं, जिससे ड्राई रन भी हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द कोड। ऑल राइट, we'll start with sum. We'll calculate sum, and there is a function accumulate which gives us sum of a vector. We'll pass 2 arguments here, nums dot begin, कि हमें sum begin से चाहिए, starting से चाहिए, कहाँ तक, end तक, ओके। तो अब हमारा sum वेरिएबल में sum of all the elements of this num vector आ चुका है। अब हमें क्या करना है, now in this loop we are assuming each element to be potential outlier
once and check if our assumption is true. Alright, तो एक for loop चलाते हैं पूरे given nums array में length will be nums dot size. Alright, now it will run from starting till end of the nums till length I plus plus. तो potential outlier क्या हो जाएगा nums I. ठीक है. नाउ एक चीज और करना है हमें. अब यहाँ पर जब हमारे पास आएगा 9 को चेक करना पड़ेगा ना क्या रिमेनिंग पार्ट में है कि नहीं है. देन फॉर दिस पार्ट वी नीड अ मैप. ये मैप से ही तो चेक करेंगे. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ मैप and we need unordered map. Integer keys will be integer and values will also be integer. Let's name it MP. Let's traverse through whole array and before doing this part of assuming potential outlier we will complete our map. Okay, I plus plus then map nums I plus plus. Here we are storing the frequency of each number we are seeing in array. ठीक है. Now अब पोटेंशियल आउटलायर निकाल लिया है तो सब में से उसको डिलीट कर देते हैं. ओके, तो 2 times we cannot name like this. 2 times sum of this spatial numbers, it will be sum minus potential outlier. ओके, ये ज़्यादा बड़ा वेरिएबल ले लिया मैंने, इसको शॉर्ट कर देते हैं. इसका नाम रख देते हैं 2 times. ओके, now if this 2 times is completely divisible by 2 means there is a chance that its half is present in the array. If it is not divisible by 2 then there is no chance, so we'll move to the next element in the array. Okay, if it is divisible, now what we'll do, we'll remove from our map this potential outlier. So map MP potential outlier minus minus. I will add it later. अब रिमूव कर दिया यहाँ से. then we'll check int half will be 2 times half. Okay, if map dot find this half is not equals to map dot end, means it is present in our map and frequency of this half must be greater than 0. Then yes, we have found the k. Our assumption was true, so let me declare a variable answer that will hold our final answer, and as we have to maximize it, we will start with the minimum value.
Okay, and we will maximize it. Answer is equals to maximum of answer and potential outlier. Like this. And we'll again increase its count. So why we had decreased it, let's see. तो पोटेंशियल आउटलायर को तो हम काउंट नहीं करेंगे ना, उसको हमने के मान लिया है, तो मैप वी आर कंसिडरिंग मैप ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स, इसलिए हमने यहाँ से उसे हटा दिया. फिर हमने देखा क्या वो प्रेजेंट है, जो हाफ है वो प्रेजेंट है रिमेनिंग पार्ट में. हाफ विल बी दिस एलिमेंट द सम ऑफ स्पेशल नंबर्स. अगर वो है देन यस, जो हमने के सपोज करा था पोटेंशियल आउटलायर सपोज करा था आउटलायर वो सही था, then we'll consider it in our answer, otherwise we'll move on to the next element. Okay, in the end we'll return our answer like this. Let's try to run it and see if we had not make any mistake. Okay, so here we must initialize the initial value as 0. Now let's try to run it again. Okay, so some error is here. It should be 2 times. Okay, now let's try again. Yes, working fine this time. Now let's try to submit it and see if it is working. Yes, it got successfully accepted. Now let's try run the code and understand it better. Okay, this is the code. So in this step we have calculated this sum 20 in some step, then we have calculated length, and this is our answer. Let me make more space here. Okay, so this is our answer, initially 0. Now unordered map will be something like this: mp 2 one time, then 3 one time, 5 one time, 10 one time. This is the map we will get after this step, this for loop. Alright, now after this we'll run this for loop. So first we'll get 2 here in potential outlier, and we'll calculate this sum minus potential outlier. Sum was 20 and potential outlier is 2. We'll get 18. Is 18 divisible by 2? Yes, it is. Then we'll come inside this if, and we'll check. We'll first subtract this 2 from our map. Its frequency will become 0, and then we'll search if 18 half, that is 18 by 2, 9 is present in map or not. It is not present, so we'll not do anything. We'll move on to the next element, that is 3. Okay, now before leaving we have increased its frequency to 1. Alright, अब 3 हम assume कर रहे हैं कि ये एक potential outlier है, then the sum will be, remaining sum will be 20 minus this potential outlier, that is 3. We'll get 17. Here in 2 times we'll get 17. Is 17 divisible by 2? No, it is not. Then there is no question of that its half is present in the remaining part. अभी 2 से divide ही नहीं हो रहा है. Then we'll move to the next part.
Okay, now we'll get 5. We'll subtract 5 from here. We'll get 15. Is 15 divisible by 2 in this step? It is not. So we'll not go inside this for loop, and our for loop will move on to the next element. It is 10. We'll subtract 10 from here. We'll get 10. Alright, is 10 divisible by 2? We'll check here in this line number 19, and yes, it is divisible by 2. Then we'll decrease the frequency of 10. Okay, we have made it 0. Now I'm searching, that is, if half of 10, that is 5, is it present in our map or not? Yes, it is present, and its frequency is must be greater than 0. See, I'm checking here, its frequency also must be greater than 0, and yes, it is. And here we are maximizing our answer. Initially it was not 0, it was int min or 0, same thing. But here we will not consider 0, we will not start it with 0 because negative values are present, so we'll start with int min. Alright, answer will be maximum of int min and 5, so answer will become 5. No 5, it will become 10, our potential outlier. Maximum answer and potential outlier, it is currently 10. Okay, and our answer is holding 10. We'll come out of this for loop. Answer will return, it is still holding 10, so 10 will be returned in this test case, and yes, 10 is the correct answer. In this way we have solved this problem. Let me explain it again briefly. We are one by one considering each element here as potential outlier, and from the rest of the elements we know that it is consisting of a special number sum, and again sum of special number as only single element. So we are dividing it by 2 से divide कर रहे हैं, तो जो भी हमें मिलता है वो होगा sum of special element. एक element as a element, it must be present in the remaining part. If it is present, then our assumption was true, because we have k and the remaining part has these two things. So we'll maximize our answer. Here we have to maximize because we can get many potential outliers, but we have to return the maximum of all of them. So we are maximizing here in this step. Alright, so I hope you have already understood this problem. This is it for this video. Keep subscribing my channel for more such videos. Thank you. We'll meet next time.